They are intellectuals. Actual intellectual. Whole life এরা শব্দে শব্দে বোঝা যায়। মানে একটা খুব সুন্দর মতো পলিটিক সেখানে আছে যে রাজা আছে ওখানে সংবিধান আমাদের কনস্টিটিউশন গুলো আলাদা আমাদের কনস্টিটিউশন হচ্ছে যে কিং যেটা বলে দিল সেটাই ফাইনাল হয়ে গেল ওর কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট হবে ওটা খুব সুন্দর বলে কিং ক্যান ডু নো রং কিং ক্যান ডু নো রং একটা শব্দ বলে দিচ্ছে মানে রাজা যখন জাস্টিস দেয় তখন যে আত্মীয়কে দেয় সেখানে লিখছে কিংশিপ হ্যাজ নো কিংশিপ রাইট বিজয়রামকে বলুন এর মানেটা বলতে So good afternoon, ladies and gentlemen. आज फिर से वापस with the daily news analysis editorial article of the Hindu paper और इसमें आज हम लोग पहले देखेंगे the first article is new hopes. Right, the vice president should forge means cement. Forge का मतलब सीमेंट यानी और मजबूत बनाना. Better ties between the opposition and the executive. Better ties between the opposition and the executive. Right, यानी opposition जो है और जो पावर में है इन लोगों के बीच में जो हर वक्त एक टेंशन चलते रहता है उस टेंशन को कटा के उनको अच्छा टाइज करवाना ये जगदीश धनखड़ का काम होगा. Right. Jagdeep Dhankar will take oath as the 14th Vice President of the country on Thursday, a day after the term of the incumbent Vice President M. Venkaiah Naidu ends. Right. तो गुरुवार को जगदीश धनखड़ ने अपना वो करेंगे ओथ लेंगे as the 14th Vice President. As the candidate of the National Democratic Alliance (NDA), he secured 528 votes of the 710 valid votes in the elections held on Saturday. Saturday को जो election हुआ है, right? Saturday को election जो हुआ है, right? The opposition candidate and Congress leader Margaret Alva got 182 votes, with the Trinamool Congress abstaining. Abstaining means staying away. Mr. Dhankhar's election was a foregone conclusion. वो पहले से ही तय था, as the NDA had a clear majority in the electoral college. जो वोट देने वाले हैं, जैसे कि ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट हम आम आदमी नहीं डालते हैं, जो MLA MPs होते हैं वो वोट डालते हैं, राइट? ओके, with the Trinamool Congress abstaining. So तृणमूल कांग्रेस ने रह गया वहां पर वोट डालने में. मिस्टर Dhankhar's election was a foregone conclusion as the NDA had a clear majority in the electoral college, which was further reinforced. Reinforced means strengthened. Reinforced का मतलब strengthened. Which was further reinforced by the support of the Biju Janata Dal and the YSR Congress Party, Andhra Pradesh se. Mr. Dhankar, a Jat leader from Rajasthan, had had stints in Delhi and the state
in the Janata Dal and the Congress before he shifted to the Bharatiya Janata Party. पहले वो जनता दल और कांग्रेस में रहे हैं और अभी शिफ्ट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी in 2003. His appointment as the governor of West Bengal catapulted him. Catapulted means to throw up at a greater height. Catapulted him into the national limelight even as the BJP fought a pitched battle. Pitched battle means tough battle. Against the Trinamool Congress to take over the reins, R-E-I-N-S. Reins means control. Right, to take over the reins of the state. जगदीप धनखड़ एक लाइमलाइट में आ गए, उनके ऊपर बहुत फोकस आ गया जब वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। जब वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन हुआ 2021 में, जहां पर कि बीजेपी ने कड़क लड़ाई किया, राइट, तृणमूल कांग्रेस के साथ, मगर बुरी तरह से हारा। A lawyer by training, he never pulled his punches. Pull his punches means stopped from being aggressive. Right, and combined political rhetoric means lofty speeches. बड़े सारे भाषण, political rhetoric, right, and legal reasoning in frequent run-ins with the West Bengal Chief Minister and TMC. Run-ins means argument and fight. Run-in means argument and fight. Right, with the West Bengal Chief Minister and TMC. उनके साथ अक्सर ये होते रहा, right. He faced charges of partisanship. Partisanship means bias. Right, bias. उनको तृणमूल कांग्रेस ने बोला कि आप बीजेपी को फेवर कर रहे हो, उनके लिए सारे बातचीत कर रहे हो, but it all ended with the TMC mending fences. Mending fences का मतलब क्या होता है? सेटलिंग इश्यूज, यानी अभी झगड़ा बंद हो गया है with the TMC mending fences with him ahead of his election as vice president. It obliquely supported him. Obliquely means indirectly. It obliquely supported him by abstaining from the polls. TMC ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में अपना वोट नहीं डाला,
right, by obliquely supporting him by abstaining from the polls. The TMC accused the Congress of not consulting it on Miss Alva's nomination. Margaret Alva जगदीप धनकर का ओपोनेंट कैंडिडेट थी, राइट, और टीएमसी ने कांग्रेस को बोला कि आपने जब मार्गरेट आल्वा को ये नॉमिनेशन दिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की कैंडिडेट बनने के लिए, राइट, तब आपने हमारे साथ कंसल्टेशन नहीं की, इसलिए वो गुस्सा हो गए, राइट, बट द क्लेम इज अनकन्विंसिंग, ये कुछ मतलब सही नहीं लगा, एंड द एंटायर एपिसोड has exposed the chinks in the opposition armor. Chink in the armor. Chink in the armor इसका मतलब होता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है वीकनेस, इसका मतलब होता है वीकनेस, ऑपोजिशन वीक है, राइट. The help that he got from the TMC added a slice of intrigue to what was otherwise a predictable victory. Intrigue means mystery or doubt. It added a slice of intrigue to what was otherwise a predictable victory. तो ये जो टीएमसी रह गए, उनके करीबन 30 से ज़्यादा लोकसभा एमपीज जो वोट नहीं डाले, राइट, इसमें एक संदेह हो रहा है कि शायद उन्होंने वोट ना डाल के जगदीप धनखड़ को सपोर्ट कर दिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन. तो हमारा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये थोड़ा इजी है, राइट, समझना. कल जैसे हमने 2 आर्टिकल्स किए थे जिसमें से सेकंड आर्टिकल बहुत ही टेक्निकल था, राइट, बट आज का आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल फर्स्ट पैराग्राफ, द समरी विल बी प्रीटी इजी. समरी इज जगदीप धनखड़ is elected the 14th Vice President of India the opponent candidate Margaret Alva was nominated by Congress, to which TMC responded with a cold shoulder, यानी उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, राइट, मैंने उनको बहुत गुस्सा आ गया, कोल्ड शोल्डर, राइट. When Dhankar was the governor of West Bengal, he had frequent disagreement with TMC, but when he was nominated as an NDA candidate,
for vice presidency, the TMC stayed away from voting this strengthened the surety of Dhankar to become the VP of India। यानी हम यहाँ पर एक पॉलिटिकल गेम हुआ जिसमें कि ऐसे तो धानकर जीतने वाले थे, क्योंकि बीजेपी का और एनडीए का जो स्ट्रेंथ है और जिसमें सपोर्ट दे दी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और जनता दल, बीजू जनता दल, तो उनका तो जीत निश्चित था। बट उस जीत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया टीएमसी, जो उनके एमएलए लोग, एमपी लोगों को बोला कि आप वोटिंग मत करिए, आप रह जाइए। और ये जो जगदीप धनखड़ के और टीएमसी के बीच में जो तनाव चल रहा था, जो टेंशन चल रहा था वेस्ट बंगाल में उनका रहते हुए, वो टेंशन बिल्कुल ख़त्म करके टीएमसी ने उनको जीतने में मदद किया, राइट। तो दिस वाज द समरी ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, प्रीटी सिंपल, बट ये न्यूज़ जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी politically important news because हमारे देश का जो राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, राइट, और फिर जगदीप धनखड़ जी हमारे वो बने हैं वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। दीज आर टू वेरी वेरी these are the two highest first and second constitutional positions। सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति है। द सेकेंड पैराग्राफ सेज द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शनल रोल आ जाता है, राइट, अ क्रिटिकल रोल एनी टाइम एंड मोर सो इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स aggressive enmity, between the government and the opposition। अभी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रहा है और वो चेयरमैन है राज्यसभा का, तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा ये जो टेंशन है इसको कम करने के लिए। पार्लियामेंट्री proceedings have been continuously stalled। Stalled here means stopped। Stalled means stopped। अब देखो ना, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कांग्रेस ने पार्लियामेंट के बाहर रहे और वहां पर काला कपड़ा पहन के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो पार्लियामेंट को फंक्शन करने नहीं दे रहे थे। have been continuously stalled। Members of Parliament have been suspended and there has been a complete breakdown of communication between the ruling BJP and the opposition parties। Members of Parliament वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर में झगड़ा झमेला करते हैं, शोर शराबा चिल्ला चिल्ली करते हैं, तो उनको सस्पेंड किया जाता है। तो पार्लियामेंट का जो स्मूथ फंक्शनिंग है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का जो आपस में कम्युनिकेशन है, ये सब सारा चीज बंद हो गया है। ruling party BJP and opposition parties। The government has repeatedly bypassed the Rajya Sabha in making of critical laws। अभी देखिए लॉज जो बनता है ये ऑपोजिशन के सहमत में होके, क्योंकि ये लॉ सबके लिए जारी होगा, राइट। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स है, जो फंक्शन है, उसमें लॉज सारे मिल के बनाना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने बाईपास किया है, राइट। repeatedly bypass the Rajya Sabha in the making of critical laws by arbitrarily। Arbitrary means
Arbitrary means random. Classifying pieces of legislation as money bills. Right? ये क्या किए हैं कि मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जो कि आप बिना राज्यसभा का अनुमति से उसको पास कर सकते हो, तो कुछ बिलों को उन्होंने मनी बिल बोल के लगा के उनको पास कर दिए हैं, तो ऑपोजिशन का कोई वहां पर से नहीं रहा. द क्वेश्चन इज नाउ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. As Vice President, Mr. Dhankar will be expected to facilitate. Facilitate means help. To facilitate better relations between the ruling party and the opposition parties and uphold the majesty. Majesty means honor. To uphold the majesty and the constitutional role of the house. ये जो constitutional role है हाउस का, इस चीज का, इसको अपहोल्ड करेंगे, इसको वो बचा के रखेंगे, क्योंकि आज के डेट में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. ऑलवेज एक फाइट जैसा सिचुएशन में ये लोग पार्लियामेंट को आधा दिन फंक्शन करने नहीं देते हैं और पार्लियामेंट अपने मन मर्जी चलाते हैं, और राज्यसभा में तो रूलिंग पार्टी अपना पूरा रोड रोलर चला के रखे हैं. इट इज नॉट एन ईजी टास्क इन द करंट सिनेरियो. अभी इस परिस्थिति में काम सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बोलता है कि पूरब में जाएंगे तो अपोजिशन चाहे हो ना हो वो बोलेंगे पश्चिम में चलेंगे. राइट? ओके, बट हिज इनिशियल मूव्स will be eagerly awaited by everyone invested in the parliamentary democracy. अभी ये जो parliamentary democracy है, इसमें क्या है ना, इसमें जगदीप धनखड़ का क्या रोल रहेगा वो देखने लायक होगा, और सब कोई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे. मिस्टर धनखड़'s elevation as vice president will certainly help the BJP politically. राइट? उनको वाइस प्रेसिडेंट तो अपना कैंडिडेट बनाए हैं, राइट? वो बीजेपी वाले भी हैं, तो अभी बीजेपी को वो तो जरूर मदद करेंगे. हिज रोल एज चेयरमैन शुड बी मोर टू प्रोटेक्ट द ऑपोजिशन स्पेस. ये जो ऑपोजिशन को अभी इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूलिंग पार्टी उनको अपना बात बोलने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी के मेंबर बहुत ज्यादा हैं, राइट? तो इसीलिए उस जगह पे जगदीप धनखड़ का रोल रहेगा कि वो उनको फंक्शन करने दे, राइट? ऑपोजिशन को अपना बातचीत को पार्लियामेंट में पेश करने दे, वगैरह वगैरह. डिबेट्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ऑपोजिशन सवाल करेगा, उस सवाल का रूलिंग पार्टी जवाब देगा, तब ना जाके काम बनेगा, राइट? तो तब ना जाके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जैसे लॉज बनता है वगैरह, जो सब बिल्स पास होते हैं वो सब सही ढंग से होगा. द इनॉग्रेशन इज ओपनिंग. The inauguration of the new vice president should renew hopes for parliamentary democracy. अभी जब नए वाइस प्रेसिडेंट आए हैं तो इनके ऊपर बहुत सारा उम्मीद है, राइट? और लगता है कि हम उम्मीद रखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट उनका रोल पूरा करेंगे और पार्लियामेंट को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में फंक्शन करने देंगे, राइट? तो चलिए हम देखते हैं कि ये सेकेंड पैराग्राफ का समरी क्या हो सकता है, राइट? दिस वन ऑल्सो इज मोर और लेस नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? Summary is the vice president now have an important role
इन द प्रोटेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन, या तो अपोजिशन प्रोटेस्ट करते हैं, वेल पे आ जाते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, निकल जाते हैं, और द बुलडोजिंग एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी, या नहीं तो रूलिंग पार्टी के इतने सारे मेंबर्स पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हैं, वो कोई भी चीज में अपना बुलडोजर चला देते हैं। धानकर हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज निभाना है, दोनों को इक्वल मौका देना है, एंड हेल्प ऑपोजिशन बी अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। ये जो आज बिल्स पास हो रहे हैं, इसमें ऑपोजिशन का भी से सही रहना चाहिए, और तब जाके लेजिस्लेशन होना चाहिए। एंड द रूलिंग पार्टी एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स, और रूलिंग पार्टी को कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स में एंगेज करना। तो हम अगर पूरा चीज को एक साथ देखते हैं तो जगदीप धानकर का अभी 14 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। मार्गरेट आल्वा को उन्होंने पराजित किए हैं इस इलेक्शंस में, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल फ्रॉम उड़ीसा, इन दोनों ने मदद की है। टीएमसी ने रह गए, उन्होंने वोट नहीं डाले, तो उसी से जगदीप धानकर का जो इलेक्शन है वो मतलब होना बहुत आसान हो गया है। और अभी जो धानकर जी का रोल होगा वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और उनको जो कि वो बीजेपी के पार्टी से हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के पोस्ट में हैं, राइट, और उनको दोनों तरफ को बैलेंस करके फंक्शनल डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट में या राज्यसभा में कायम होने के लिए उनको मदद करना चाहिए, ताकि हमारा जो भी बिल्स पास होता है, जो भी डिसीजन पॉलिसी होता है, वो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिलके ले। सो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज की समाज में ये आर्टिकल बहुत बड़ा मायने रखते हैं। हम लोग आर्टिकल देखने से हमें इसके लिए हमें पता चलेगा कि सही में ये चीज जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन है, और ये लड़कियों को और औरतों को बहुत मदद करेगा। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। अ लॉ विदाउट अ फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स एरर, फ्लॉ मीन्स एरर। The Supreme Court has put unmarried woman, sorry, the Supreme Court has flaw, flaw means error. Right. The Supreme Court has put unmarried women on an equal footing in availing. Availing means using. I avail a bus to go home. I use a bus. Abortion services, यानी गर्भपात को लेके ये हमारा आज का सेकंड आर्टिकल है। The most celebrated kind of court judgments are those that eliminate inherent bias. Inherent is अंदरूनी, something which is there from birth, right? বাংলায় বলে অন্তর্নিহিত। Bias vested in a law or rules framed by the government, right? The most celebrated kind of court judgments are those that eliminate inherent bias. মানে এটা আমাদের সমাজে একটা মানে অদ্ভুতভাবে একটা বায়াস রয়ে গেছে, এবং সেই জিনিসটাকে যখন কোর্ট চেঞ্জ করে সেটা একটা খুবই সুন্দর জিনিস হয়। The Supreme Court moved last week to set right a rule that was manifestly arbitrary and violative of women's right to bodily dignity. तो ये जो है हमने बोल रहे हैं manifestly arbitrary and violative of women's right to bodily dignity. जो महिला हैं उनका शरीर उनका अपना है, राइट, और उसको हमें सम्मान करना चाहिए। डिग्निटी इज रिस्पेक्ट,
of the position, right, the aspect of the position fits right into the concept of justice that is free and without prejudice. Prejudice is false belief. Without prejudice or favor to any person or group of people, right? सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है कि औरतों को और लड़कियों का जो गर्भपात लेके जो उनके तरफ एक हॉस्टाइल एटीट्यूड था, राइट, उनके अगेंस्ट में जो कोर्ट जो लॉ था उसको भी चेंज करना है. अर्लियर द एपेक्स कोर्ट इन इट्स विजडम द अबॉर्शन beyond 20 weeks of a young unmarried woman whose partner parted ways after realizing she was pregnant. ऐसा हमारे देश में बहुत सारा होता है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में उनका सद्भाव होता है, वो आपस में उनका फिजिकल रिलेशन होता है और उसके बाद जब लड़का को पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भवती है, तो उनको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि तब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है. Had the court rested then, it might have meant relief for one woman who had to go all the way to the top court of the land in order to access what 7 other categories of women would have been able to do without legal hassles. जो 20 सप्ताह के बाद प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर्स होता है, तो उसमें अगर 20 सप्ताह के बाद जो अबॉर्शन का केस होता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियां होती हैं जिनको वो पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, और जब तक उनको सही ढंग से पता चलता है तो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हम एक सिटी में रहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारे लिए चीज अलग होता है और उनके लिए अलग होता है. तो वो जब न्याय मांगने जाते हैं तो न्यायाधीश जो होते हैं वो उनको मानते नहीं. While the judgment could have been cited in support of other women in a similar situation, the law retained its flaw. वो जो गलती हैं, एरर जो हैं, उसको लॉ ने अपने पास रखा. And others would still have had to take the long legal route and wait upon the discretion of individual judges. तो वो उनको गर्भपात करवाने के लिए उनको दुनिया सारे आईनी जो सब समस्याएं हैं, राइट, लीगल जो हैं, वो सबके थ्रू से जाना पड़ता है. तो उनका मेंटल फिजिकल बोथ एक प्रॉब्लम हो जाता है, राइट, वो बहुत प्रॉब्लम में, टेंशन में आ जाते हैं, राइट. यूटिलाइजिंग द फुल एक्सपेंसिव रीच ऑफ इट्स पावर्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू करेक्ट द एनोमली. एनोमली वंस अगेन मीन्स द एरर. Anomaly. A bench comprising Justice D.Y. Chandrachud and J.B. Padiwala are considering pronouncing a judgment. Pronouncing means declaring. Pronouncing a judgment which would make access to medical abortion a level playing field. Level playing field means where everyone gets equal opportunity. Equal opportunity for all. Level playing field. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971 and its rules 2003 prohibit unmarried women. यही है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971 and its rules 2003 prohibit unmarried women who are between 20 weeks and 24 weeks pregnant to terminate the pregnancy. उनको वो abortion नहीं करवा सकते हैं, गर्भपात नहीं करवा सकते हैं, right? The court's argument pierced at the heart of the inequity in the law. Inequity means not equal. Equity is equal, not equal, right? If a married woman
had access to abortion facilities during the same period, then why should an unmarried woman be prevented from using these services? ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक शादीशुदा औरत, अगर उनको ये फैसिलिटी है कि वो अबॉर्शन करवा सकती है, वो गर्भपात करवा सकती है, तो एक जो शादीशुदा नहीं है मगर उनके पेट में बच्चा है, तो वो क्यों नहीं करवा सकती है? अनमैरिड वुमन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग दीज सर्विसेज, राइट? Exhorting the government to have a forward-looking interpretation of the law. Exhorting means seriously appealing. Exhorting the government to have a forward-looking interpretation of the law, the bench pointed out that the rules mention partner and not husband. रूल्स में पार्टनर शब्द है, हस्बैंड शब्द नहीं है, क्योंकि देखिए लॉ एक वर्ड्स को लेके एक गेम होता है जहां पर हर वर्ड का अहमियत होता है, इंपॉर्टेंस होता है, और उस वर्ड को इधर उधर करके बहुत सारे चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमें क्या बोल रहे हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पैराग्राफ का अगर हम समरी करें तो वो ऐसे होगा, सुप्रीम कोर्ट has taken a progressive decision to overturn the age-old MTP Act, Medical Termination of Pregnancy Act, and has allowed the abortion of pregnant unmarried women beyond the period of 20 weeks of pregnancy. The court termed this as a forward-looking, progressive step to respect the bodily dignity of a woman. तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का summary. Supreme Court has taken a progressive decision to overturn the age-old MTP Act and has allowed the abortion of pregnant unmarried women beyond the period of 20 weeks of pregnancy. The court termed this as a forward-looking, progressive step to respect the bodily dignity of a woman. चलिए हम सेकंड पैराग्राफ जाते हैं तुरंत और इसमें देखते हैं
कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बता रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं, if the Supreme Court was feted for taking a liberal view of the law, its act of pushing the envelope further to set right existing anomalies in law is to be celebrated in full measure, right? So feted means congratulated. सुप्रीम कोर्ट को हम अगर शाबाशी देते हैं कि ये लॉ को थोड़ा लिबरल बनाया जाए, पुशिंग द एनवेलप, ये एक ईडियम है। पुशिंग द एनवेलप का मीनिंग होता है टू टेक क्विक and decisive action. Further, to set right existing anomalies in law is to be celebrated in full measure. इसका खुशी मनाना चाहिए. At a time when the United States Supreme Court recent ruling overturning Roe versus Wade has drawn that nation back several decades on the abortion question. USA जो कि इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है, वहां पर वो लोग अपने जो अबॉर्शन रूल्स हैं उसको पीछे लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, वी विल नॉट अलाउ अबॉर्शन, रूल्स आर बिकमिंग एंटी अबॉर्शन रूल्स, राइट। इंडियाज अपेक्स कोर्ट मीन्स जो सर्वोच्च अदालत हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट, मूव स्टैंड्स आउट इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। सो इंडिया प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रहे हैं। It is the surest example of the court's willingness to be modern and progressive. देखिए, in order to remove antediluvian का मीनिंग है old, outdated, बहुत पुराना, प्राचीन, इनकंसिस्टेंसीज इन एग्जिस्टिंग लॉज। वो चाहते हैं कि ये सब जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं जिससे कि लड़कियों को अपना अबॉर्शन का डिसीजन लेना और उसको लीगली करवाना उसमें तकलीफ आता है, उसको सुप्रीम कोर्ट हटाना चाह रहा है। इट इज ऑल्सो इन द फुल स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अपना फ्रीडम ऑफ राइट्स एंड एक्सप्रेशंस के ऊपर होता है, that guarantees to all persons equality before the law and equal protection of laws. सब समान है आइन के आंख के सामने, राइट, सबके लिए प्रोटेक्शन है। The law cannot cherry pick. Cherry pick means selectively choose. Law cannot cherry pick beneficiaries, and if there is to be any justice at all, the antiquated, antediluvian, same meaning. Very old, outdated. Principles on which old acts were built cannot continue to frustrate young women who claim autonomy of their own body. अपना शरीर है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं, इसमें कानून हाथ नहीं लगा सकता है, राइट, इसका मीनिंग ये है। सो जस्टिस सबको देना है, पुराने जो लॉ हैं उसको अभी निकालना है, राइट, और लड़कियों को वो आज़ादी देना चाहिए कि वो कब अपना बच्चा को अबॉर्शन कर सकती है, जब तक ना उनके लिए मेडिकल कोई खतरा हो जाए। एक वक्त होता है प्रेगनेंसी का जिसके बाद उनको मेडिकल खतरा हो जाए, जानलेवा हो सकता है, तो वो चीज सही नहीं है,
राइट। तो उसके लिए कानून जो है वो अभी भी रहेगा, मगर जब तक मेडिकली एक अबॉर्शन फीजिबल होता है वो करवा सकती हैं, तो वो अभी कानून के दायरे पे वो उस चीज को कर सकेंगे, उसमें कोई बाधा प्राप्ति नहीं होगा, राइट। तो हमारा ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट लिया है, इस डिसीजन को सब कोई बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही मॉडर्न डिसीजन बता रहे हैं। सो द सेकंड पैराग्राफ का जो समरी होगा, वो समरी ये होगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट should be congratulated for the decision on the to overturn the old laws which create trouble for women in terms of their bodily independence. Right. There are inconsistencies in the abortion laws as per Article 14, which guarantees equality to every person in the eyes of law. सो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ, और इसमें जो हम देख रहे हैं कि दोनों पैराग्राफ मिला के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव मॉडर्न डिसीजन आया है एज पर अबॉर्शन, रिलेटेड टू अबॉर्शंस, एंड उसमें लड़कियों को ये आज़ादी दिया गया है कि वो अपना अबॉर्शन 20 वीक्स के बाद भी करवा सकती है, जब तक ना उनका कोई मेडिकल खतरा हो, राइट। और उनको अपना डिग्निटी एंड राइट्स पूरी तरह से मिला है इस चीज के मामले में। सो दैट वाज ऑल आज के लिए आप लोगों का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। कल फिर मिलते हैं और कोई नया 2 टॉपिक को लेके हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच इसमें आने के लिए, और रोज आते रहिए, रोज अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।